Good afternoon, participants. Good afternoon to all of you. Here I, Snehlata, welcome to all in the fifth day of validated course, Human Rights, a General Perspective. I'm feeling privileged and highly give to thanks to for this opportunity to welcome eminent speaker for today. Today we have respected Avinash Kumar sir. Presently he is a senior research fellow in the Department of Public Administration, Lucknow University, Lucknow. He is very enthusiastic person, and I'm very sure about that ki today he is going to cover about what is a human right in Indian constitution and Indian administrations. I'm very sure about that. His lecture is really beneficial for our participants as well as us also. So please stay connected, stay with us. Without any further late or without any delay, please join, sir. I welcome to you in our value-added course, and the day is up to you. Today's lecture is organized for you or by us for you only. So I'm very happy for that. Ki you are going to bless our participants for this lecture. So welcome, sir, in our value-added course, Human Right, a General Perspective. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. First of all, thank you very much for inviting me for this lecture. And should I start now? I Yeah, have to yeah. present. It's up to you. No, it's up I to you. have to present some slides. Okay, so just share your screen, sir. Okay, I will. Is this visible? Uh, The slides are I just visible. request to my technical team, please share the screen of Avinash, sir. Okay. Okay, Right, sir. is it Thank you, sir. visible It's now? up to you, and just start your lecture. Okay, sir. Yeah, sure. Okay. Just a minute. Okay. Do we have a interaction this in this session or not? Do we have? Sir, please, can you repeat your sentence again? Can we have an it is an interactive session or it's a kind of monologue? It's a kind of monologue, not really monologue, because this is a YouTube is streaming. So our participants join this session, and they are connected with the chat box. So if there is any doubts or there is any query, you can check your Okay. chat box. Otherwise, Okay. if we have received any type question or any type doubts, we'll forward to you. Okay. Thank you, man. Okay. Good afternoon, all of you. Uh, Today's topic, which is assigned to me, is human rights and the Indian Constitution. I just want to give a brief of first what is human rights and what are the relation between the our Indian Constitution and the human rights, and then I'll move towards the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commission, and then we'll come to the question answer round. First, we need to understand before going further that what are human rights. If we look towards the history, if we look towards the history of rights, we have to go back to the ancient times. वहां पर जब हम जाकर देखते हैं तो वी नो दैट कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो आपके very from the very beginning, for the very inception, it was there. Maybe we are not able to recognize at that time कि उस टाइम पे हम उसे रिकॉग्नाइज तो हमने नहीं किया होगा, बट ओवर द period of time, over the due course, we have recognized it. जब से मानव जाति आई है उसके बाद से ही इन सारी बातों को किया जाने लगा है. और जो एंशियंट टाइम में हम नेचुरल राइट्स की बात करते थे,
जो बेस था आपके नेचुरल लॉ पे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे, उन्हीं सिद्धांतों का जो एक्सप्रेशन है वही ह्यूमन राइट्स है। तो अगर मैं कुछ लाइंस में इसको अगर सम अप करने की कोशिश करूं, if I want to sum up these things in few lines, I would say the human rights are those basic rights, those essential rights which should be there for the development of human. Means these are those minimum rights जो किसी भी मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बिना इसके, बिना इन अधिकारों के, बिना इन मानव के अधिकारों के हम किसी भी मानव का एग्जिस्टेंस नहीं समझ सकते। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम यही जानेंगे कि ये किस प्रकार के अधिकार हैं और ये किस प्रकार से ये अधिकारों का पूरा कॉन्सेप्ट ही है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स दो बेसिकली शब्दों से मिलकर बना है, ह्यूमन एंड राइट्स। इफ यू फॉरगेट अबाउट these thing human word, first we need to understand what are rights, अधिकार क्या होते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसे मानवाधिकार की तरफ ले चलेंगे। राइट तो अगर हम राइट्स की बात करें तो बेसिकली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ राइट: नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। प्राकृतिक, वैधानिक। और वैधानिक में ही हम पाते हैं कि सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं और आपके इकोनॉमिक राइट्स। बेसिकली जो आपके अधिकार होते हैं, इन अधिकारों का जो, इन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके इस बात पे चलता है कि ये आपके क्लेम्स हैं। किस प्रकार के क्लेम्स हैं ये जो राइट्स हैं, ये आपके नेगेटिव क्लेम्स हैं आपके स्टेट के ऊपर। अब आपको ये सोच के लग रहा होगा कि ये नेगेटिव क्लेम्स क्यों हैं? राइट्स तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन सपोज करिए एक ऐसी कंडीशन का जहां पर दो प्रकार के लोग रह रहे हैं। एक है जिसके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में शक्ति है, मतलब एक बहुत पावरफुल है, जैसा कि हॉब्स कहता है कि लेवियाथन है। और दूसरा ऐसा है जिसके पास शक्ति कम है। तो जिसके पास शक्ति कम है उसको सशक्त बनाना है अगर, तो जो अधिक शक्तिशाली है उस शक्तिशाली को अपनी शक्तियों को क्या करना होगा? कुछ सीमित करना होगा। और ऐसे में ही ये जो अधिकार हो जाते हैं वो नेगेटिव क्लेम हो जाते हैं उस पावरफुल बॉडी की तरफ। मतलब उस पावरफुल बॉडी के कुछ राइट्स को वो कम कर रहा होता है। इसीलिए ये अधिकार क्या है? ये अधिकार एक प्रकार से नेगेटिव क्लेम्स हैं आपके। और इन्हीं अधिकारों में आते हैं आपके लीगल राइट्स, मॉरल राइट्स और नेचुरल राइट्स। बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल राइट्स की और मॉरल राइट्स की। लीगल राइट्स तो वो राइट हुए जो किसी भी देश के किसी भी संविधान में या किसी भी कानूनी तरीके से वो राइट उस पर्टिकुलर किसी बाउंड्री में रहने के लिए वाले लोगों के लिए बना दिए गए, या आसपास से कुछ देशों के लिए और बना दिए गए। लेकिन नेचुरल राइट वो राइट हैं, वो अधिकार हैं जो अधिकार आपको आपके बाय बर्थ से मिल जाते हैं, आपके जीवन का अधिकार। जैसा कि मैं आपके सिलेबस की तरफ जब देख रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग का मेरे ख्याल से अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो चुका होगा। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था वो 1948 में दिसंबर 10 को पेरिस में हुआ। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी, अगर आप पढ़ें इस हिस्ट्री को, जो इसके पीछे की हिस्ट्री है, तो आप पाएंगे इस इतिहास के बारे में कि ये इतिहास इस प्रकार का है कि इस पूरे वर्ष, इस पूरी अर्थ ने, पूरे विश्व ने एक प्रकार के दो विश्व युद्ध झेले थे। और इन दोनों ही विश्व युद्धों में क्या हुआ था? बड़ी ही मात्रा में संहार हुए थे। अगर आप हिटलर की बात करें तो वो अपने आप में एक ऐसा तानाशाह था जिसकी कोई परिकल्पना नहीं थी। मुसोलिनी,
और इसी प्रकार से अन्य और भी लोग थे जिसमें बड़ी संख्याओं पे क्या हुआ था, आपस में युद्ध हुआ था। और उस वॉर के रिजल्ट, आप हमेशा अगर आप किसी भी वॉर का रिजल्ट देखें तो आप पाएंगे कि वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, कभी भी किसी भी वॉर में कोई जीतता नहीं है। उसके पीछे कारण है कि ह्यूमैनिटी हार जाती है। क्यों? क्योंकि एक देश जो शायद ये कह रहा है कि किसी शक्ति के बल पे वो जीत गया है, और जो दूसरा देश ये कह रहा है कि किसी शक्ति के कम होने के कारण वो हार गया है, दोनों ही जगह नुकसान हुआ है, दोनों ही जगह मानव का नुकसान हुआ, दोनों ही जगहों पे जान माल की हानि हुई। चाहे आप वर्तमान के एग्जाम्पल उठाकर देखें, रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल उठाकर देखें, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। रीसेंट हिस्ट्री में जाइए, आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि नहीं, ये वो अधिकार हैं जो सीमाओं से बंधे ही नहीं है। ये वह अधिकार हैं जो आपको आपके जन्म के साथ मिलने चाहिए थे, और आपके जन्म के साथ आपको इसे अश्योरेंस के साथ मिलना चाहिए। राइट? मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अधिकारों की बातों को समझ रहे हैं तो साथ में एक कॉन्सेप्ट और समझते जाइए। यहां पर देखिए, केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, इनके कोरिलेशंस में ड्यूटीज भी आती हैं। देयर विल बी नो राइट इफ देयर इज नो ड्यूटी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के कर्तव्य नहीं है तो वो अधिकार आपके पास आ नहीं सकते। और ये जो ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आपको उन्हीं मानवाधिकारों की तरफ ले जाता है, ह्यूमन राइट्स की तरफ ले जाता है। क्योंकि हम म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अगर हम म्यूचुअल एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, देन विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स। राइट? चलिए अब अपने मेन मुख्य टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के विशालतम संविधानों में से एक है, या विशालतम संविधान है। इट्स द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था 1948 में, अगर आप ध्यान से अगर भारत की हिस्ट्री को देख रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री को देख रहे होंगे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो ये शायद वही समय है जिस टाइम पर हमने क्या देखा है, जिस टाइम पे हमने यह पाया है कि उसी टाइम के अराउंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है। एक तरफ उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखिए कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि भारत एक ऐसी जगह से निकला है, बहुत ही जहाँ पर अपराध था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अन्याय था, अत्याचार था, और गुलामी से बाहर निकला है। और दूसरी तरफ पूरा विश्व अगर आप देखें तो पूरा विश्व एक विश्व युद्ध में लिपटा हुआ था और उस विश्व युद्ध से बाहर निकला है। कहीं ना कहीं उन दोनों के सेंटिमेंट्स आप देखेंगे तो सेम दिखाई देंगे। और इसीलिए जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं और आपके संविधान हैं, इन संविधान में जो अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों को आप पाएंगे कि इनमें काफी सिमिलैरिटी है। आगे चल के हम बात करेंगे कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ। हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जैसे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, ये आपको कई प्रकार के राइट्स इंश्योर कराता है। और जब ये 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पे पड़ा था। और केवल इतना ही नहीं, आगे चल के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी इसमें चेंजेस हुए हैं, जितने भी परिवर्तन लाए गए हैं, आगे कई आप देखेंगे 1996 में आपके इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ
सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 के ही रेजोल्यूशन में था। इन सब के आपके देखेंगे कि सबके इम्पैक्ट आप अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे देख सकते हैं। और जब इस पे इम्पैक्ट आप देखते हैं तो आप पाएंगे देयर आर ह्यूज सिमिलैरिटीज, कई प्रकार की समानताएं हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात करना शुरू करें तो पार्ट 3 में दिया हुआ है, इसमें कई प्रकार के राइट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। लेट अस जस्ट गो थ्रू दैट फर्स्ट। अगर आप आर्टिकल 14 की बात करें तो देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेम प्रोविजन आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 7 में है। अगर आप आर्टिकल 32 की बात करते हैं जो राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कई प्रकार के रिट्स को, हेबियस कॉर्पस हो गई, सर्जरी हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, इस प्रकार की कई 5 प्रकार के रिट्स को अगर वो अलाउ कर रहा है तो इस प्रकार का आर्टिकल हमें आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 8 में मिलता है प्रोविजन। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो यूडीएचआर में ये आर्टिकल 9 में है और अपने संविधान में ये आर्टिकल 21 में दिया है। इसी प्रकार से देयर आर मेनी आर्टिकल्स। रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, राइट टू फ्रीडम एंड कंसाइंस एंड प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आप ये सब अपने संविधान में देख सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, एंड राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन आपके आर्टिकल 21A में है, विच वॉज अमेंडेड लेटरली, जो बाद में आपके संविधान में जुड़ा। और ये हम देख सकते हैं कि ये एक, अगर ये उस समय की परिस्थितियों के आंदोलन का प्रभाव था तो शायद ये उस समय के आंदोलन का प्रभाव के होने कारण भी रहा होगा, पर इसकी एक वास्तविकता यह भी है कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था ये उसका भी इम्पैक्ट था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कुछ, तो मैं बात कर रहा था कि पर्सनल लाइफ की लिबर्टी, आर्टिकल 21 में दी है ये बात। हमारे भारतीय संविधान में अगर उसे ढंग से पढ़ा जाए, उसे क्लियरली एसेस किया जाए तो वी कैन इजीली थिंक that the article 21 was elaborated by the Supreme Court by n number of times. In other words, we can say that कि आर्टिकल 21 जो है वो सबसे ज्यादा क्या किया गया है, इलेबोरेट किया गया है। इससे ज्यादा किसी आर्टिकल को आज तक इलेबोरेट नहीं किया गया। आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 है आपका सिंपली राइट टू लाइफ। अगर मैं कुछ कहानियों की बात करूं, अगर कहानियां ही, अगर स्टोरीज की बात करें कि इसके पीछे की स्टोरीज क्या थी, स्टोरी धीरे धीरे करके चलती गई आगे की तरफ। भारत का संविधान का निर्माण केवल 1950 तक नहीं है कि हाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। अगर फेमस थिंकर वुडरो विल्सन की बात करें तो इसे इट इज टफर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू मेक वन। तो संविधान चलाना उससे कठिन काम है और उसके आगे कई प्रकार के चेंजेस करना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से जब राइट टू लाइफ की बात की गई तो उस राइट टू लाइफ को, मतलब आपके जीने के अधिकार को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, उसमें कई चीजें आने लगी।
पहली बात, जीने का अधिकार केवल जीने तक सीमित नहीं है, केवल राइट टू लाइफ केवल लाइफ तक सीमित नहीं है। इट इज एक्सटेंडेड टू डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ मतलब गरिमापूर्ण जीवन भी होना चाहिए। अगर आप सिंपली अगर इस चीज को अगर एसेस करना चाहें, समझना चाहें, तो ये एक विशेष प्रकार का मानवाधिकार है। ये एक ऐसा ह्यूमन राइट है कि केवल जीना ही जरूरी नहीं है, आपको इस प्रकार से जीवन जीना है कि आप वो गरिमापूर्ण जीवन रहे, डिग्निफाइड तरीके से रहे। तो हमारी जो माननीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया, इसको डिग्निफाइड लाइफ से एक्सटेंड किया। इसमें तमाम चेंजेस हुए हैं लगातार, इसको एक्सटेंड किया गया है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस की बात की गई कि अगर कोई भी अत्याचार किसी प्रकार का होता है तो हाउ टू कंपनसेट दैट। अगर किसी की लाइफ चली जाती है तो किसी उसका कॉम्पनसेशन क्या होगा। देखिए, कोई व्यक्ति जीवित है तब तो शायद हो सकता है उसका कुछ कॉम्पनसेशन हो सकता है, लेकिन किसी की लाइफ ही चली गई है तो उसको किस प्रकार से कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसकी ह्यूमन राइट्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कई प्रकार के न्यायालयों में कई कई दिनों तक केस लंबित रहते हैं, कई दिनों तक केस पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पेंडेंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्पीडी ट्रायल नहीं है, जजेस कम है, कई प्रकार की चीजें हैं, फॉल्स केसेस हैं। ऐसे में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है और जो व्यक्ति को किसी भी आदमी को न्याय मिलने की बात होती है, वो न्याय मिलने की बात कम होती चली जाती। हैंड कफिंग की बात करें तो शुरुआत में जब भी किसी को पकड़ा जाता था उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती थी। अदर थिंग इज कि जब हाथ में हथकड़ी लगा दी गई है, आपने पहले ही समाज में क्या कर दिया, उसे मुजरिम घोषित कर दिया। आपने उसे अपराधी तुरंत बना दिया जैसे ही आपने उसे हथकड़ी लगाई। परंतु सच तो इतना सा है कि हथकड़ी लगना एक सिंबोलिज्म है। सही और गलत का फैसला तो न्याय करेगी, लेकिन उस सही गलत का फैसला उस हथकड़ी के लगते ही पहले ही क्या कर देती है, समाज न्याय कर देती है। तो इस प्रकार के इंसिडेंट से बचने के लिए हैंड कफिंग को भी रोक दिया गया। देखिए, अपने भारत जैसे देश में जहां पर शैक्षिक जागरूकता थोड़ी कम है, या शिक्षा की तरफ हम बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज कम है। और ऐसे में किसी विशेष विषय की नॉलेज होना जो आपके पूरे जीवन पर इंपैक्ट डालता हो, वो विषय है लॉ का। और ऐसे में आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट जस्टिस। उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। और जिन भी लोगों को कानून का ज्ञान है, व्हाट दे डू, दे सिंपली डिग मनी आउट ऑफ इट। तो ऐसे में कहा कि ये तो फिर राइट टू लाइफ में आया ही नहीं। इसीलिए फ्री लीगल एड की बात भी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलेबोरेट किया है कि डिग्निफाइड लाइफ केवल, जो राइट टू लाइफ है वो केवल रोटी कपड़ा मकान देने पर सीमित नहीं रह जाएगी, ये आगे चल के और भी चीजों पे आएगी। मसलन क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं अगर आप, कि पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए तभी तो आप जीवित रह पाएंगे। फर्ज करिए एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ढेर सारी धूल और धुआं है, क्या आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं? लगातार नहीं। आपको कई प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएंगे। एंड when you are encountering those respiratory diseases,
इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगी और फिर उसके बाद अनेक तरह की बीमारियां, और फिर वो आपका राइट टू लाइफ, फिर राइट टू हेल्थ, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट। इसी प्रकार से राइट टू प्राइवेसी की भी बात है, जो भी रिसेंट हमने पुत्तस्वामी केस में देखा था, पुत्तस्वामी केस में। राइट टू प्राइवेसी में क्या है? देखिए, हम धीरे धीरे डिजिटल एज में आ गए हैं, और इस डिजिटल एज में एवरीथिंग इज, जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, इट इज ऑनलाइन। सब कुछ गूगल जानता है। बट एक चीज जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि ये आपकी जो निजी कंप्यूटर की या निजी फोन की जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं काफी बड़े स्तर पे बिकती हैं। रिसेंटली एक काफी बड़ी कंपनी ने, फेसबुक ने खुद माना कि हम आपके डेटा बेच रहे थे। और आज जो ये डिजिटल एज है, डेटा इज द न्यू मनी। आपका डेटा कहीं भी आउट हो सकता है और आपके भी प्राइवेट लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और जब प्राइवेट लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात कर रहा है, वो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी भी एक तरीके से स्टेक पर है। हम किसी सर्विलांस स्टेट में नहीं रह रहे हैं। हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे जियो और जीरो दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंडर में ही आया है। देखिए, मैं जानबूझ के आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक आर्टिकल 21 एक ऐसा वाहिद आर्टिकल है, एक ऐसा बड़ा आर्टिकल है हमारे संविधान में, जिसमें लगभग लगभग कई ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। राइट टू हैव ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की बात करता है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आर्टिकल 21 ये बात करता है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, क्रूएलिटी, अनयूजुअल पनिशमेंट और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ये भी आर्टिकल 21 करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात भी यही करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी किन केसेस में दिया जाएगा। हर केस में नहीं दिया जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। स्पीडी ट्रायल की, फ्री लीगल एड की, डिलेड एग्जीक्यूशन की, ये बात करना भी आवश्यक है। डिलेड एग्जीक्यूशन, फर्ज करिए किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है, उसकी एक तारीख मुकर्रर हो चुकी है कि इस तारीख को उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वो दिन प्रतिदिन उस तारीख का इंतजार कर रहा है। उस इंतजार करने में कई प्रकार की प्रॉब्लम को झेल रहा होगा, मानसिक रूप से अजीब तरीके से उसके अंदर व्यवहार चल रहे होंगे। फिर एक उसके केस में नया मोड़ आता है, कुछ दिनों के लिए वो फांसी टल जाती है, या उस तारीख को आगे कर दिया जाता है, या उसने पार्डनिंग की अपील डाल रखी है, तो उस पार्डनिंग की जो अपील पड़ी हुई है, उस अपील पे कोई एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। मतलब कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज डेथ। कि आज या कल शायद क्या फैसला आ जाए, किस प्रकार का फैसला आ जाए, और क्या एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, उसमें डिले होता चला जा रहा है। लोग ऐसे हैं जिनको काफी डिले हुआ, और ऐसे डिले में आप उस व्यक्ति के जो जेल में है, उस व्यक्ति के बस मानव अधिकारों के बारे में सोचिए। उसके मानव अधिकार तो कहीं पर भी नहीं है। आपने बस उसने एक क्राइम किया जिसकी उसे सजा मिलनी है, तो उसे सजा देकर खत्म करिए। लेकिन उससे सजा देने में इंतजार कराना, लगातार देरी करना, या उसका एग्जीक्यूशन है तो उस एग्जीक्यूशन को डिले करते रहना, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। हमारी सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कहती आई है कि प्रिजनर्स के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। की बात करें तो कस्टोडियन डेथ की बात करते हैं, हम कस्टोडियन वायलेंस की बात करते हैं, जहां पर पुलिस, कई बार ऐसा पाया गया है केसेस में कि
गलत तरीके से व्यवहार करते हुए, कई बार कस्टोडियन डेथ हुई हैं, कई बार वायलेंसेस हुए हैं। तो यहाँ ये समझना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है, जो भी व्यक्ति मुजरिम है, उसके अगर कुछ अधिकार समाप्त हो रहे हैं तो उसके मानव अधिकार कभी समाप्त नहीं हो रहे हैं। उसका मानव की तरह ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। उसका मनुष्य की तरह, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में जीवन लिया है, तो उसका उसी प्रकार से ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपने कई बार कुछ घटनाएं देखी होंगी, कई देशों में जब माइग्रेशन होता है, एक देश किसी किसी देश में किसी यहीं युद्ध हो गया, गृह युद्ध चल रहा है, वहां के बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े व्यक्ति ये क्या करते हैं, बॉर्डर पे जाकर रिफ्यूज मांगते हैं, रिफ्यूजी का स्टेटस मांगते हैं, राइट टू शेल्टर। विश्व के किसी भी संविधान में इस अधिकार की बात नहीं की गई है कि हम शेल्टर देंगे। लेकिन आप बस इस बारे में सोचिए कि राइट टू शेल्टर होना जरूरी है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहीं से प्रताड़ित होकर वापस आ रहा है तो उस प्रताड़ित व्यक्ति को अपने यहां शरण देना आवश्यक है कि नहीं, शरणार्थी। और इसी प्रकार की बात ह्यूमन राइट करता है। ये हमारे संविधान में तो नहीं लिखा है राइट टू शेल्टर, लेकिन भारत की सरकार अनेक तरीकों से उनको मदद करने की प्रयास करती है, जैसे फ्री हेल्थ देके, एड देके, फूड देके। अपार्ट फ्रॉम दैट कई प्रकार के एनजीओ जो हैं उस पर काम करते हैं, और हेल्थ पे काम करते हैं, फूड पे काम करते हैं, अदर सब्सिडीज पे काम करते हैं, जिससे क्या हो सके कि जितने टाइम वो यहाँ पर हैं, जितने टाइम उनके घरों में दिक्कत है, उतने टाइम तक उनको क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। बिकॉज जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज कि बाउंड्रीज तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहेंगी। अगर आप 70 साल पहले की बात कर रहे हैं या उससे एंशिएंट टाइम में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि विश्व में जितने भी देश रहे हैं उनकी बाउंड्रीज कभी एक ऐसी नहीं रही आज तक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बाउंड्रीज चेंज होती जा रही हैं, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही है, वहां पर रहने वाले लोग। दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। और वो जो कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट का क्या करना है, सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आगे चल के यही कांस्टेंट रहने वाला है। बाउंड्रीज में ऑल्टर, बट ह्यूमन बीइंग हमेशा सरवाइव करेगा। इसी प्रकार से राइट टू हैव पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी, इन सब की बात करता है। ये तो बात हुई पार्ट 3 कि आपके पार्ट 3 में किस प्रकार के राइट दिए गए हैं, और जितने भी प्रकार के राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, वो मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया आर्टिकल 19 में, जो यूडीएचआर में है, अपने यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) में है। राइट टू एजुकेशन 21(a), प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है तो अपने यहाँ 29 में है, वहाँ 22 में है। इसी प्रकार से और भी कॉवेनेंट्स हुए हैं। केवल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं रहा है 1948 का, 1966 में इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी रहा। इसमें भी अगर बात करें तो जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जो आर्टिकल 6 और 9 में दिया हुआ है आईसीसीपीआर में, आर्टिकल 21 में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग की बात अगर करता है तो वो आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 में है, और तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में। इसी प्रकार से प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो अपने आर्टिकल 22 की बात कर रहा है, वो हम बात बताएंगे तो आर्टिकल 9, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 की बात है। राइट टू इक्वालिटी, राइट नॉट टू बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट ओन सेल्फ, डबल जियोपार्डी की बात करते हैं,
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के मसले में, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट ऑफ एनी रिलीजन, ये आपके 25, 26, 27, 28 की बात है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) और 19(2) में जो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं 19(2) में, उनकी बात करता है। और इसी प्रकार से आपका राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन की बात होती है, ये आपके 19(1)(c) में है, जिसमें अब कोऑपरेटिव भी जोड़ा गया, और फिर एक साल पहले कुछ कोऑपरेटिव से रिलेटेड आर्टिकल को अबॉलिश किया गया है बिकॉज ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड इन दोज थिंग, दैट इज अ डिफरेंट इशू। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज की बात करता है, तो आर्टिकल 16 में आप ये देखेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ आपका 14 या आर्टिकल 15। आर्टिकल 13 की बात करें, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, इसमें बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंश्राइंड हैं, या अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन आर्टिकल्स को इंक्लूड किया है, उन आर्टिकल्स को या उन बातों को एक्सटेंड किया है, या उन चीज़ों को नैरो डाउन किया है, जिससे क्या कर सकते हैं आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। मीन्स थ्रू इंटरप्रिटेशन आपकी कोर्ट्स ने, हमारी माननीय न्यायालय ने उनको एक्सटेंड किया है या नैरो डाउन किया है, जिससे हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ सकें। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि केवल यही एक आर्टिकल नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में थे। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, तो जिन्हें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इनिशियल अगर ड्राफ्ट देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इनका नाम था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। एंड दीज राइट्स आर द फ्यूचर राइट्स, ये भविष्य के अधिकार थे, जो उस समय हमारे संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि ये वो अधिकार होंगे जो भविष्य में दिए जाएंगे या एज पर दी स्टेट रिसोर्सेस। और यही वो अधिकार हैं जो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आपको जान के और इसके कंपैरिजन में आपको देख के आपको हैरानी होगी कि हमारा संविधान तो 1950 में बन के तैयार खड़ा था, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हुआ, उनके अगर आर्टिकल देखेंगे तो इट इज ऑलरेडी देयर, हमारे संविधान से काफी मेल खाते हैं। जैसे राइट टू वर्क की बात की गई थी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट में, आर्टिकल 6 सब क्लॉज 1 में, बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये पहले से ही उसमें आर्टिकल 41 में दिए गए हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है, आर्टिकल 7 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1। ये आपके आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39D में दिए हुए। राइट टू लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ फॉर लाइफ, जो आर्टिकल 7 में था, आपके आर्टिकल 43 में है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं। कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे आर्टिकल 45 में था, लेटर इट वाज एडेड अप टू प्राइमरी के लेवल तक, इट वाज एडेड टू इन 21A, बट आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द प्री प्राइमरी इज आल्सो इंक्लूडेड। 3 to 6 ईयर की एजुकेशन भी वो इंक्लूड हो गई है लीगली, कि जहां जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती जाएगी वहां वहां उस प्रकार से प्री प्राइमरी के भी एजुकेशन आप देते जाएंगे। ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क की भी बात करता है, जो आर्टिकल 42 में बात करता है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट वो बात करता है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 10 में।
प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 39F में वो बात लिखी हुई है जो आपका आर्टिकल 10 सब क्लॉज 3 में है, पब्लिक हेल्थ की बात करता है। तो ये आप पाएंगे कि जो हमारा संविधान के अधिकतर हिस्से जो हैं, जिसमें मेजर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हिस्सा अगर छोड़ा जाए, तो अगर उस हिस्से को देखें तो आप पाएंगे कि कई हिस्से आप ऐसे पाएंगे जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। उसके पीछे कई रीजन है, कई प्रकार के रीजन है। एक तो जब भारत का संविधान बना तो भारत का संविधान कई देशों के संविधानों की स्टडी करने के बाद बना था। पर इससे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं वो ये था कि भारत 200 सालों की गुलामी से निकला था अंग्रेजों की, जिसमें बहुत अत्याचार हुआ था। और ऐसे में जो 200 सालों में अंग्रेजों ने किया था वो ह्यूमन राइट्स का ही वॉयलेशन किया था लगातार। चाहे वो बंगाल का फेमाइन आप देख लें, कि एक प्रकार से वो फेमाइन था ही नहीं, वो बस कंडीशन क्रिएट कर दी गई थी, जो भी फसलें थी उन्हें अपने गोदाम में रखे, फसल की आपूर्ति नहीं हो पाई और उसके बाद क्या हुआ, अनाज की कमी पड़ने लगी और धीरे 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 चीजें बिगड़ती चली गई। और इसी प्रकार से कई बार हम ये बातों को देखते हैं कि हमारे संविधान में काफी बेहतर तरीके से चीजों को लिखा गया है, क्योंकि उसके पीछे वो हमारा पूरा जो इतिहास है, हमारा जो पूरा स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल उसकी कहानी बताता है कि हर एक आर्टिकल उस मानव अधिकार को अपने आप में समेटे हुए, उस ह्यूमन राइट्स को अपने आप में लिए हुए। और इसीलिए कोई भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट उठा के देख लीजिए जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हुआ है, सिविल या पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर हुआ है, आप पाएंगे देयर आर ह्यूज सिमिलैरिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, ये उच्चतम न्यायालय भी दिन प्रतिदिन इन क्या कर रहा है, एक तरीके से कस्टोडियन का काम कर रहा है हमारे संविधान का। और संविधान के कस्टोडियन होने के नाते वो संविधान को क्या कर रहा है, लगातार एक्सटेंड करता चला जा रहा है आर्टिकल्स में, राइट्स के माध्यम से, राइट को एक्सटेंड करके और कुछ राइट्स को नैरो डाउन करके। ऐसे में एक बात जानना और थोड़ी और जरूरी है, ये जो लाइन आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये लिखा है कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बट इट शोज हाउ इंडिया अंडरस्टूड द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। ये स्टेटमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही है कि जिस बेहतर तरीके से हमारे भारत ने उस चीज को समझा, देखिए बहुत से देश आजाद हुए 1945 के बाद, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जब वो कॉलोनी का रूल टूट गया, जब यूरोप के शासन खत्म होने लगे, तो बहुत से देश आजाद हुए उसके बाद। और उन सभी देशों ने क्या किए, अपने अपने संविधान बनाने के प्रयास किए, लेकिन जिस इंटेलेक्ट के साथ और जिस राइट डायरेक्शन के साथ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया, वो आज भी एक रिमार्केबल चीज है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप बात करें तो बहुत से अन्य ऐसी चीजें हैं जिन पे ये लागू होते हैं। जैसे आप आर्टिकल 44 की बात कर लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, सेक्युलर नेशन की बात करें, तो इसमें कई प्रकार की चीजों में चेंजेस होते रहते हैं। राइट टू वोट की बात करते हैं। हमारे संविधान में जब ये संविधान लागू हुआ तो इस संविधान में पहले से ही कई प्रकार के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख दिया गया, जिसमें राइट टू वोट भी था।
राइट टू वोट में अगर आप कई देशों के राइट टू वोट की अगर तुलना करें, तो भारत के संविधान में जो राइट टू वोट दिया गया था, वो राइट टू वोट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये कहा गया कि वो सभी वर्ग के लोगों के लिए अवेलेबल होगा एक एज के बाद। अगर पूरे वर्ल्ड का इसमें बात करें तो हम ये पाएंगे कि ये सभी देशों में लागू तो हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये एक ट्रिकल डाउन थ्योरी की तरह लागू हुआ कि शुरुआत में वोट देने का अधिकार किसको था? जो एजुकेटेड हैं, जो अमीर हैं, जो इलीट क्लास में है। यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, वहां पर अगर आप जाकर देखें तो बहुत बाद में जाके आप पाएंगे कि कुछ लोगों को बहुत बाद में जाके वोट का अधिकार मिला। एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ा फेमिनिज्म से। और हमारा संविधान पहले दिन से इनकी बात करता है कि सभी को ये अधिकार है, रिस्पेक्ट ऑफ आप कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप किसी भी वर्ग से आते हैं, आप ऊंची जाति के हैं, आप नीची जाति के हैं। क्योंकि इन सब कॉन्सेप्ट से ऊपर क्या कॉन्सेप्ट था? इंडिया कॉन्सेप्ट था। और इसीलिए भारत के आजाद होते हुए ये सारे अधिकार क्या किए गए? उन्हें प्रदान कर दिए गए। अब तक के हुए डिस्कशन में हमें यह समझ में आया कि भारत का संविधान और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ये दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं और उनका एक कंपैरेटिव अकाउंट मैंने आपको दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज कि केवल इतने से ही काफी नहीं था। राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भी स्थापना की गई अक्टूबर 1993 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसके बारे में अभी और जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना की गई, इस एक्ट को बनाया गया, साथ में स्टेट ह्यूमन राइट्स की भी का भी गठन किया गया। और अब हमें इसके पावर, फंक्शंस और इसका किस प्रकार से संगठन है, उस संगठन को भी जानना चाहिए। तो जो कॉम्पोजिशन है हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ये कॉम्पोजिशन है कि जो भी चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन क्या होगा? आवश्यक रूप से या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। देखिए, यहाँ पर आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये पढ़ रखा हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है, बट इन 2019 देयर वाज एन अमेंडमेंट जो आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कमेटी में, जो कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं या अदर मेंबर्स होते हैं, उनमें एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया और उनके चेयरमैन पे कौन रह सकता है? जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो रिटायर्ड होता था, अब उसकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेंबर ऐसा होगा, ये तो चेयरपर्सन होगा, अपार्ट फ्रॉम एक मेंबर ऐसा होगा जो कभी जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेंबर ऐसा भी होगा जो किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 अन्य सदस्य होंगे। जो ये 3 अन्य सदस्य होंगे, ये 3 अन्य सदस्य जो होंगे अपॉइंटेड होंगे। ऐसे लोगों में से इनका अपॉइंटमेंट होगा दोज हु हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हों ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स पे। और इन 3 सदस्यों में एक सदस्य का महिला होना आवश्यक था। तो ये कंपोजिशन आप समझ गए कि एक चेयरमैन होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है और जज हो सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट का। एक सदस्य ऐसा जो
सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, एक मेंबर और ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मेंबर जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट के रिलेटेड मसले पर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 3 अन्य सदस्य हैं जो पार्ट डी में आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक महिला होना इनका अनिवार्य है, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके चेयरमैन और इनके अन्य सदस्यों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इसके चेयरपर्सन और इसके अन्य सदस्यों का अपॉइंटमेंट इनके हमारे प्रेसिडेंट के वारंट पे अंडर हिज हैंड एंड सील के द्वारा होता है। और ये प्रेसिडेंट के हैंड एंड सील पे जाने से पहले ये कमेटी के द्वारा रेकमेंड किए जाते हैं। इस कमेटी में देख लीजिए कौन कौन रहता है। इस कमेटी में भी एक चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरपर्सन कौन होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। बाकी अन्य कई सदस्य होंगे। उन सदस्यों में स्पीकर ऑफ आपके लोकसभा, आपके हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर, आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, आपके हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके राज्यसभा के। और एक विशेष बात जो यहां ध्यान रखिएगा वो ये है कि डेप्यूटी चेयरमैन की बात करता है यहां पे एज अ मेंबर, ना कि चेयरमैन की। जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो सदस्य होंगे, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन आपके उपराष्ट्रपति। अब हम जान लेते हैं कि इनका टेन्योर कितना होगा। इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे वो सदस्य हो, या 70 साल की एज, जो भी उनमें से क्या हो जाए पहले कंप्लीट हो जाए, राइट। इतना समझ गए आप। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसमें चेयरपर्सन रह चुका है उसको फर्दर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में उसे नहीं रखा जाएगा, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका जो इसमें जो चेयरपर्सन है और इनके जो मेंबर हैं, इनका रिमूवल कैसे होगा। तो इसका चेयरमैन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होगा, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन अपने रिटन तरीके से एक नोटिस के द्वारा प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे सकता है। एक तो ये तरीका हो गया उसके पद से हटने का। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उसे उसके पद से हटाया जाए। तो चेयरमैन चाहे और उसके कोई भी सदस्य हों, उनको हटाने का तरीका यह है कि उनके ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का चार्ज लगा, और ये चार्ज क्या हो, ये चार्ज प्रूफ हुआ हो इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर जारी करेगी और फिर प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से क्या करेगा, चेयरमैन और किसी भी सदस्य जिसके खिलाफ ये व्यवस्था है, जिसके खिलाफ ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूफ हुई है, उसको क्या करेगा, वहां से हटाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 2 कंडीशन तो हैं कि एक बार खुद इस्तीफा दे दे, दूसरा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है। कुछ तरीके ऐसे हैं जो जनरल नेचर के होते हैं, जो सामान्य होते हैं, जो हमेशा होंगे। इसमें पहला है कि वो इंसॉल्वेंट प्रूफ हुआ हो, मतलब दिवालिया हो गया हो, अपनी ड्यूटीज के अलावा कहीं और पे पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहा हो, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी की बात हो रही हो, या अनसाउंड माइंड की बात कर रहा हो, या किसी भी प्रकार में अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व है जहां मॉरल टर्पिट्यूड की बात हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के द्वारा
चेयरमैन या किसी भी व्यक्ति उसके सदस्य को अपने ऑर्डर से निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि इनके पावर और फंक्शंस की। इनके पावर और फंक्शन की बात करें तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो गठन किया गया था, वो ये गठन इसलिए किया गया था कि हम क्या कर सकें, हम एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन कर सकें। जहां कहीं भी ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, उन वायलेशंस को हम लोग रोक सकें। और इन वायलेशंस को जब हम रोकेंगे तो ऐसे में आपके ह्यूमन राइट कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कई प्रकार की पावर्स क्या करनी होंगी, डेलीगेट करनी होंगी। तो ऐसे में जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इंक्वायर कर सकता है, सुओ मोटो ले सकता है किसी भी विक्टिम के और किसी भी पर्सन के बिहाफ पे। ये किसी भी कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, ना केवल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, बल्कि ह्यूमन राइट के अबेटमेंट पर भी। नेग्लिजेंस की केवल बात नहीं करता है, ये बात करता है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी बात करते हैं कि नेग्लिजेंस से ये काम हुआ। देखिए, नेग्लिजेंस का गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन जब आप किसी पद पे बैठे हैं तो आपसे सबसे कम गलती होने की अपेक्षा होती है, क्योंकि वो गलतियां क्या करेंगी, वो किसी के ह्यूमन राइट को डायरेक्टली अफेक्ट कर देंगी और काफी आगे तक चल के क्या हो जाएगा उस पर बात आएगी। ये किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स जहां पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात चल रही हो और वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हो, में इंटरवीन कर सकता है, ऑब्वियसली विद द अप्रूवल ऑफ दैट कोर्ट। अगला, किसी भी प्रकार की जेल में या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जहां पर किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है या किसी पर्सन को ट्रीट किया जाता है, कहीं पे रिफॉर्म किया जाता है, जैसे बाल सुधार गृह होते हैं, जिला कारागार होते हैं, इस प्रकार की चीजों में क्या किया जाता है, दैट पर्सन जो वहां पे रह रहा है, वहां पे वो विजिट कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और उनकी स्थिति को देख सकता है, चाहे वो महिला सुधार गृह हो, चाहे वो वृद्धावस्था वाली जगहें हों, ओल्ड एज होम्स हों, चाहे किसी प्रकार की जेल हो, चाहे कोई कन्फाइनमेंट की जगह हो जहां पे किसी को डिटेन करके रखा जाता है, ताकि वहां पर रहने की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सुधारा जा सके। आप डिटेन करके किसी व्यक्ति को ऐसी जगह नहीं रख सकते जहां पे उसे खाना पानी ये सब ना मिले, या आप बाल सुधार गृह में आप इस तरीके से नहीं रह सकते किसी बालक के कि उसके उसके बालक का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट रुक जाए। और ऐसी जगह पे वो विजिट करके गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देता है, ताकि उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो सके, कार्य किया जा सके। किसी भी प्रकार के सेफगार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी और लॉ के द्वारा दिए गए हैं, उन लॉ का रिव्यू कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उसके नए मेजर्स ले सकता है, ताकि हम उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। टेररिज्म के एक्ट हो गए, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट रेमेडीज यूज की जाती हैं, ऐसी बातों को करते हुए क्या करना होता है, वहां पर अपने
फैक्टर्स को यूज कर सकता है, उनको रिव्यू कर सकता है, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज कई होती हैं इन सब चीज़ों पे, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो ऐसे में उन इंटरनेशनल ट्रीटीज और उनके इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टडी करता है और उस पर अपने प्रेजेंटेशन देता है, जिससे अपने यहाँ किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली वहाँ पे प्रेजेंट हो सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अवेयरनेस स्प्रेड करना, अलग तरह की कई प्रकार के ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिससे ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग को पता लगे। और ऐसी वो सारी गतिविधियां जिससे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, वो सारी एक्टिविटी इसके पास है। अगर पावर्स की बात करें इनकी, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक सिविल कोर्ट के सारी शक्तियां प्राप्त। तात्पर्य यह कि वह सिविल कोर्ट जो है वो क्या क्या कर सकता है, उन सारी चीजों में किसी भी दस्तावेज को मंगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को गवाह देने के लिए बुला सकता है, राइट, कई प्रकार के रिकमेंडेशन दे सकता है। तो इस प्रकार सिविल कोर्ट की पावर सारी आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मिली हुई। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसी की लाइन पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाती है, जो अमूमन इस तरीके से होगा, पहले तो राज्य का नाम होगा, फिर ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। अब इस जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये किन किन मैटर में अपनी बातें बोल सकता है, इसमें भी एक लिमिटेशन लगी है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने कोई एज सच लिमिटेशन नहीं देखी थी, लेकिन यहां पर हम एक लिमिटेशन देखते हैं कि यहां पर केवल लिस्ट 2 और लिस्ट 3 जो हमारे 7 शेड्यूल में है। 7 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केवल यूनियन लॉ पास कर सकता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट पास कर सकता है, और कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट बोथ दोनों लोग अपना लॉ ला सकते हैं। ऐसे में जो स्टेट के द्वारा पास किए गए लॉ हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का उसी के ऊपर क्या रहेगा, एक अधिकार रहेगा और उन्हीं पर ही क्या कर सकता है, अपने नियम बना सकता है। इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम ये पाएंगे कि इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है, इसका संगठन किस प्रकार का, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। तो चेयरपर्सन कौन होगा, जो चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट रहा हो। ये भी अगेन वो 2009 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। दूसरा पर्सन ऐसा होगा हु हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट, या किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो एटलीस्ट 7 ईयर तक, 7 सालों तक जिला जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। एक मेंबर ऐसा होगा जिसे अपॉइंट किया जाएगा, वो हैव द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार में जिसका क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा, यहां पर भी जिस प्रकार से हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देखा था, उसी प्रकार से यहां पर भी अपॉइंटमेंट में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में आप पाएंगे कि जो चेयरपर्सन होंगे वहां के मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे जो सदस्य होंगे वो सदस्य इस प्रकार से होंगे, एक सदस्य होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर होंगे, थर्ड जो डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर जो इंचार्ज होंगे, गृह विभाग के जो मंत्री होंगे वो उसके सदस्य होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसके एक सदस्य होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। टेन्योर लगभग उतना ही है कि 3 साल और
70 years of age, whichever is earlier, चाहे सदस्य हों चाहे आप इस प्रकार से हों। इनके रिमूव करने का तरीका भी उसी प्रकार से दिया हुआ है जिस प्रकार से आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देखते हैं। तो एज पर नाउ आई थिंक थैंक यू एवरीवन जो भी ये स्लाइड में मेरे साथ जुड़े, इस क्लास को देखा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो दीज क्वेश्चंस आर ऑल मोस्ट वेलकम। You have any questions? Okay, fine. This is my mail ID. You can see my mail ID at the screen, and this is my mobile number. If you have any query regarding this, you are most welcome to contact me, and I can address all of your query. For that, this is it for this session. I hope you all have understood it well. Thank you very much. स्क्रीन पहले रेडी कर लीजिए फिर ऐड टू स्क्रीन करिए।
Okay. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Khurshid Alam. First thing, I would like to thank Mr. Avinash for his today guest lecture, and thank you, Avinash. And now today we have another guest, Dr. Khwaja Danish Hameed. He will talk about today lecture, Institutionalization of Human Rights, a Historical Perspective. Then I would like to request Dr. Khwaja Danish sir, please come and start. So, am I on air? जी अब बड़ा कर दिया नहीं मैंने तो कर दिया पूरे बड़ा नहीं में भी की नेटवर्क इशू होगा इसीलिए स्लो आ रहा है चलिए आप कंटिन्यू कीजिए So good afternoon everyone. The topic of my presentation is Institutionalization of Human Rights, a Historical Perspective. So starting with the contents that I will be covering. Contents are, first content I will be taking, what is the meaning of institutionalization? What is what is human being? How human beings evolved and everything. What are human rights? How human rights evolved through history? What is the need for human rights? What how the meaning of human rights altered through history? What is the future of human rights? So starting with the first topic, what is the meaning of institutionalization? Institutionalization process of developing or transforming rules and procedures that influence a set of human interaction. To institutionalize something means to establish it as a part of camera is on. To institutionalize something means to establish it as a part of cultural, social system or organization. Sorry for interruption. प्लीज एक बार आप लोग आ जाए चेक कर लें ये मैं कर लूँ नहीं इधर है So, institutionalization is a process of embedding some conception, for example, a belief, norm, social particular value, or mode of behavior within an organization, social system, or society as a whole. The term may also be used to refer to committing a particular individual or a group to an institution, such as mental or welfare institution. The term may also be used in a political sense to apply to creation of organization of governmental institution or particular body responsible for overseeing or implementing policy. For example, in welfare or development. During the period of industrial revolution in Europe, many
countries through many countries went through a period of institutionalization. Which saw a large expansion and development of role of government within society, particularly into areas seen previously as private sphere. Institutionalization is also seen as important part of the process of modernization in developing countries, involving the expansion and improved organization of governmental structures. Next will be a video that will be helping us in understanding what is institutionalization, what is the meaning of institutionalization. So let's watch this video. वीडियो चल रहा है, वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो इज स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग. What is the meaning of industrialization? They are explaining and discussing what is industrialization. So video. इसको शेयर करना होगा. शेयर हो रहा है. Just sharing. Stop sharing it. नीचे वाली स्लाइड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए की तरफ से तो जा रहा है, कनेक्टिविटी इशू हो रहा है. क्योंकि आप लोग भी एक लिंक देख सकते हैं क्या आप यहाँ पे भी. What should I do? Should I stop or should I continue? You should continue. Don't wait. Video is. You are live. So we recently issued a report. Why Just it's a 6 or 7 minutes video. After that, I will continue. What are we doing? I think people capture a lot of changes taking place in the past. It encompasses the desire to scale growth, sustainable, economic survival. Institutionalization is the term simply dealing with handling all that predictable, shine, up, down, function. What function are you? Just like that, it's all about how do you scale it. When we think about it, it's actually sensitive. That's one of the seeing a number of succession planning is critical. A number of personality found the land cultures, principles, management. We see things such as how to manage succession planning, how you manage environment, like transparent environment. Critical. Yes, skills you know. Sharing. Yeah, it's sharing. Just stop sharing. Actually, we don't think that's and entrepreneurial. That's not fun, certainly, but wow, scale.
हम बता रहे हैं कि नेटवर्क इशू है, आप लाइव है अभी और रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप समटाइम्स with all that's going on in reality complex, how do you prioritize? Obviously, the cost of organization is very important driving so prioritization and the cost. Absolutely. I think a lot of it's going to be academic We should just skip this. So a lot of Okay. So first of all, we should understand what is human being. The human being is a complex matter, and many believe that just trying to understand life and what it means to be human is a futile undertaking. We believe that we have to try to understand life and get a grip on many phases of life because it can be of great value to us to learn to recognize the fundamental principle of how life is lived to the fullest. Learning to recognize the good and evil forces of life help us to make us good ones. To be human is to balance between hundreds of extremes. Should I continue? So we should next slide will be dealing with a video that will be portraying to us how human beings evolve and what is the definition of being human. So here's the video. humans. Strange, upright primates with unusually large brains. That has taken over and dominated the world like no other. In modern times, only a single species of human still walks the earth, Homo sapiens. We are only a sliver of the species that are considered human. We are at the end of a long line of other people. You may be surprised to learn that our ancestors were also considered human. They are much more like us than we previously thought. Some of them wore clothes, had language, culture, and families. Just like you and I, they loved, they wore, they thought of everything. It's a video actually, so I don't have option. A group that has taken over and dominated the world like no other. In modern times, humans. Strange, upright primates with unusually large. वीडियो इसी में है ना, पीपीटी में वीडियो है ना, हाँ पीपीटी में वीडियो. तो उसके नहीं आ रहा. चल तो जो उस पढ़ा के कैसा कंटिन्यू करते हैं, Skipping the videos. Video skip करते हैं. स्किप नहीं आ रहा ना. ठीक है. So what are human rights? Human rights are moral principles or norms for certain standard of human behavior and are regularly protected in municipal and international laws. Human rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. So there's a beautiful video of human rights which I am skipping because of connectivity issues. So what is international human rights law? Human rights laws lays down the obligation of governments to act in certain ways or to refrain from certain acts in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individual or groups. One of the great achievements of United Nations is the creation of comprehensive body of human rights laws, a universal and internationally protected code to which all nations can subscribe and all people aspire. The United Nations has defined a broad range of internationally accepted rights, including civil, cultural, economic, political, and social rights. It has also established mechanisms to promote
protect these rights and to assist states in carrying out their responsibilities. International humanitarian laws also say that the foundation of this body of law are the Charter of United Nations and United Universal Declaration of Human Rights adopted by Geneva Assembly in 1945 and 1948 respectively. Since then, United Nations has gradually expanded human rights laws to encompass specific standards for women, children, persons with disability, minorities, and vulnerable groups who now possess rights that protect them from discrimination that had long been common in many societies. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all the regions of world. The declaration was proclaimed by United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 by General Assembly Resolution 217A subclause 3 as a common standard of achievement for all peoples and all nations. It sets out for the first time fundamental rights to be universally protected. Since its adoption in 1948, the UN UDHR has been translated into more than 500 languages, the most translated document in the world, and has inspired the constitution of many newly independent states and many new democracies. The UDHR, together with International Convention on Civil and Political Rights and its two optional protocols, that is on the complaints procedure and on the death penalty, and the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights and its optional protocol from the so-called International Bill of Human Rights. So the economic, social and cultural rights, what are they? An elaboration of that. The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights entered into force in 1976. The human rights that the human rights that the convent seeks to promote and protect include the right to work in just and favorable condition, the right to social protection, to an adequate standard of living, and to the highest attainable standards of physical and mental well-being, the right to education and enjoyment of benefits of cultural freedom and scientific progress. Civil and political rights. The International Convention on Civil and Political Rights and its first optional protocol entered into force in 1976. The second optional protocol was adopted in 1989. The convention deals with such rights as freedom of movement, equality before law, the right to fair trial and presumption of innocence, freedom of thought, conscience, and religion, freedom of opinion and expression, peaceful assembly, freedom of association, participation in public affairs and elections, and protection of minority rights. It prohibits arbitrary deprivation of life, torture, cruel or degrading treatment or punishment, slavery, forced labor, arbitrary arrest or detention, arbitrary interference with privacy, war, propaganda, discrimination, advocacy of racial and religious hatred. Human Rights Convention, a series of international human rights treaties and other instruments adopted since 1945 have expanded the body of international human rights laws. They include Convention to Prevent Punishment of Crime of Genocide in 1948, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in 1965, the Convention of on all elimination of all forms of discrimination against women in 1979, the Convention on the Rights of Child in 1989, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006, and amongst other as well. Then we come to the structure of Human Rights Council. The Human Rights Council, established on 15th of March 2006 by General Assembly,
and reporting directly to it. Replace 60-year-old UN Commission on Human Rights as the key UN intergovernmental body responsible for human rights. The council is made up of 47 state representatives and is tasked with strengthening the promotion and protection of human rights around the globe by addressing situation of human rights violation and making recommendation on them, including responding to human rights emergencies. The most innovative feature of Human Rights Council is Universal Periodic Review. This unique mechanism involves a review of human rights records of all 193 UN member states once every 4 years. The review is cooperative, state-driven process under the auspices of Council, which provides the opportunity for each state to represent measure taken and challenges to be met to improve the human right situation in their country and to meet their international obligation. The right is designed to ensure universality and equality of treatment to for every country. Then we come to UN High Commission for Human Rights. The United Nations High Commission of Human Rights exercises principal responsibility for UN human rights activities. The High Commission is mandated to respond to serious violation of human rights and to undertake preventive actions. The Office of High Commission for Human Rights OHCR is focal point for United Nations human rights activities. It serves as secretariat for Human Rights Council, the treaty bodies, expert committees that monitor treaty compliance, and UN human rights organs. It also undertakes human rights field activities. Most of the core human rights treaties have an oversight body which is responsible for reviewing the implementation of that treaty by the countries that have ratified it. Individual whose rights have been violated can file complaint directly to the committees overseeing human rights treaties. Next slide. Human rights and the UN system. Human rights is a cross-cutting theme in all UN policies and programs. In the key areas of peace and security, development, humanitarian assistance, and economic and social affairs. As a result, virtually every UN body and specialized agency is involved to some degree in the protection of human rights. Some examples are the right to development, which is at the core of sustainable development goals, the right to food, championed by UN Food and Agriculture Organization, labor rights defined and protected by the International Labour Organization, gender equality, which promulgated by UN Women, the right of children, indigenous people, and disabled persons. So there's another video that is made by Anthony Guterres, which I am skipping because of technical issues. The COVID-19 pandemic has reinforced two fundamental truths about human rights. Is it working? First, human rights violations harm us all. The COVID-19 pandemic has had a disproportionate impact on vulnerable groups, including frontline workers, people with disabilities, older people, women and girls, and minorities. It has thrived because poverty, inequality, discrimination, destruction of our natural environment, and other human rights failures have created enormous fragilities in our societies. At the same time, the pandemic is undermining human rights by providing a pretext for heavy-handed security responses and repressive measures that curtail civic space and media freedom. The second truth highlighted by the pandemic is that human
rights are universal and protect us all. An effective response to the pandemic must be based on solidarity and cooperation. Divisive approaches, authoritarianism, and nationalism make no sense against the global threat. People and their rights must be front and center in response and recovery. We need universal rights-based framework like health coverage for all to beat this pandemic and protect us for the future. My call to action for human rights So I'm spells skipping out the this video central since role of it is human not rights in visible to crisis you all. response. So next slide will be dealing with what is historical perspective in order to understand this topic. Historical perspective is the study of a subject in the light of its earliest phases and subsequent evolution. Historical perspective differs from history in that the object of historical perspective is shaping one's vision of present and not the past. So, what is historical perspective? The understanding can be much better if I would able to have been display this video to all, but unfortunately, because of technical glitches, I am not able to show this video. So, I'm skipping to the next slide. So, how human rights evolved through history? The origin of human rights are ideally pinpointed to the year 539 BC. The troops of Cyrus the Great conquered Babylon. Cyrus freed the slaves, declared that all people had the right to choose their own religion, and established racial equality. There's another video which I will be skipping that deals with how human rights evolved throughout history. So, coming to the next slide, another video that how Islam, how a religion played an important role in evolution of human rights throughout history. So this picture says it all that women previously didn't had any rights, and the same goes for the blacks and or the black Americans, and also to the Native Americans. They didn't have much rights, and America in those days were dominated by the white supremacists. So it's the agitation against that white supremacy is clear visible on this slide. That vote for women and vote for blacks. So coming to the next slide, how human rights evolved throughout history. The belief that everyone, by virtue of her or his humanity, is entitled to certain human rights is fairly new. Its root, however, lie in the earlier traditions and documents of many cultures. It took the catalyst of World War II to propel human rights onto the global stage and into the global conscience. Throughout much of history, people acquired rights and responsibility through their membership in groups. A family, indigenous nation, religion, class, community, state. Most society have had the tradition similar to the golden rule of do unto others as you would have them do unto you. The Hindu Vedas, the Babylonian code of Hammurabi, the Bible, the Quran, the Annals of Confucius are the five of the oldest written sources which address questions of people's duties, rights, and responsibilities. In addition, the Inca and the Aztec Code of Conduct and Justice and Iroquois constitutions were the Native Americans sources that existed well before 18th century. In fact, all societies, whether in oral or written tradition, have had systems of property justice as well as ways of tending to the health and welfare of their members. So next slides that deals with the birth of United Nations. The idea of human rights emerged through stronger after World War II. The extermination by Nazi Germany of over 6 million Jews, Sinti and Roman gypsies, homosexuals, and persons with disability horrified the world. Trials were held in Nuremberg and Tokyo after World War II, and officials from the defeated countries were punished for committing war crimes.
crime against peace, and crime against humanity. Governments then committed themselves to establish the United Nations, establishing the United Nations with primary goal of fostering international peace and prevention of conflict. People wanted to ensure that never again would anyone be just unjustly denied freedom, denied life, freedom, food, shelter, and nationality. The essence of emerging human rights principles was captured in President Franklin Delano Roosevelt 1941 State of Union address when he spoke of a world founded on four essential freedoms: freedom of speech and religion, and freedom from want and fear. The calls came from across the globe for human rights standards to protect citizens from abuses by their government, standards against which nations could be accountable for the treatment of those living in their borders. The voices played a critical role in San Francisco meeting that drafted the United Nations Charter in 1945. So, coming to the Universal Declaration of Human Rights, member state of United Nations pledged to promote respect for human rights of all. To advance the goal, the UN established a commission on human rights, charged it with task of drafting a document spelling out the meaning of fundamental rights and freedoms proclaimed in the Charter. The Commission, guided by Eleanor Roosevelt, forceful leadership captured the world's attention. On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by 56 countries of United Nations. The vote was unanimous, although 8 nations chose to abstain. The UDHR, commonly referred to as International Magna Carta, extended the revolution in international law unassured in the United Nations Charter, namely that how a government treats its own citizens in now or a matter of legitimate international concern, and now simply a domestic issue. It seems that all rights are interdependent and indivisible. Its preamble eloquently asserts recognition of inherent dignity and of the equal inalienable rights of all members of human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. The influence of UDHR has been substantial. Its principle has been incorporated into constitution of most or of the more than 185 nations now. In the UN, although the declaration is not legally binding document, the United Nations Declaration has achieved the status of customary international law because people regard it as a common standard of achieving peace and human rights. So, coming to the fact that what is the need of human rights? Everyone needs access to medicine, food, water, clothes, shelter. By including these in a person's basic human rights, everyone has a baseline level of dignity. Unfortunately, there are still millions of people out of there who don't have the necessities, but staying in it's a matter of human rights allows activists and others to work towards getting those for everyone.
Human rights protects vulnerable groups from abuse. The Declaration of Human Rights was created largely because of Holocaust and horrors of World War II. During the time in history, the most vulnerable in the society were targeted, although with the Jewish population, including those with disabilities and LGBT. Organizations concerned with human rights focus on members of societies most vulnerable to abuse from power holders instead of ignoring them. Human rights allows people to stand up to the social corruption. The concept of human rights allows people to speak up when they experience abuse and corruption. This is why specific human rights, like the right to assemble, are so crucial because no society is perfect. The concept of human rights empowers people and tells them that they deserve dignity from society, whether it's the government or the work environment. When they don't receive it, they can stand up for. Human rights encourage freedom of speech and expression. So, while similar to what you just read about, being able to speak freely without fear of brutal reprisal is more expansive. It encompasses ideas and forms of expression that not everybody will like to agree with. But no one should ever feel like that they are going to be in danger from their government because of what they think. It goes both ways too, and protect people who want to debate or argue with certain ideas expression in the society. Human rights have Human rights give people the freedom to practice their religion, not to practice any. So, religious violence and oppression occurs over and over again all across history, from the Crusades to the Holocaust to modern terrorism in the name of religion. Human rights acknowledges the importance of persons' religion and spiritual beliefs and let them practice in peace. The freedom to not hold to any religion is also a human right. Human right allows people to love who they choose. The importance of freedom to love cannot be understated. Being able to choose what one's romantic life looks like is an essential human right. The consequence of not protecting this right is clearly visible when you look at countries where LGBT people are oppressed and abused, or where women are forced into marriages they don't want. Human rights encourage people. Human rights encourage equal work opportunities. The right to work and make living allows people to flourish in their societies. Without acknowledging the work environment can be biased based on downright oppressive, people find themselves enduring abuse or insufficient opportunities. The concept of human rights provides a guide for how workers should be treated and encourage equality. Human rights given give people access to education. Excuse me. Education is important for many reasons and is crucial for societies where poverty is common. Organizations and government
concerned with human rights provide access to schooling, supplies more in order to halt the cycle of poverty. Seeing education as a right means everyone can get access, not just the elites. So, how human rights protect the environment? The marriage between human rights and environmentalism is becoming stronger due to climate change and the effect it has on people. We live in the world, we need to land. So it makes sense that what happens in the environment impacts humanity. The right to clean air, clean soil, and clean water are all the important and other rights included in the human rights list. Human rights provides a universal standard that holds government accountable. Human rights when the UDHR was released, it had a twofold purpose: provide a guideline for future and force the work to acknowledge that during World War II, human rights have been violated on a massive scale. With a standard for what is human right, government can be held accountable for their actions. There is a power in naming an injustice and pointing to precedent, which makes UDHR and other human rights documents so important. So, how the meaning of human rights altered through history? This is another topic which I will cover. The origin of human rights are idly pinpointed to the year 539 BC, when the troops of Cyrus the Great conquered Babylon. Cyrus freed the slaves, declared that all people had the right to choose their own religion, and established racial equality. These and other principles were recorded on a baked clay cylinder known as Cyrus cylinder, whose provision served as inspiration for the first four articles of universal human rights. So, coming to Europe and its relation with human rights, that is, Europe and human rights. Another cornerstone in human rights history is represented by the promulgation of Magna Carta of 1215, which introduced a raw concept of rule of law and the basic idea of defined rights and liberties of all persons, which offered protection from arbitrary persecution and incarnation. Before the Magna Carta, the rule of law, now considered as key principle for good governance in any modern democratic society, was perceived as a divine justice, solely arbit distributed by the monarch on the or the king, or in the case King John of England. Europe and human rights. Again, the continuation of the previous slide. An evolution of concept of right expressed by Magna Carta is represented by English Bill of Rights. It was an act signed into law in 1689 by William III and Mary II, who became co-rulers in England after the overthrow of King James II. The bill outlined specific constitutional and civil rights and ultimately gave Parliament power over the monarch.
Many experts regard the English Bill of Rights as primary law that set the stage for constitutional monarchy in England. It's also credited as being an inspiration for the US Bill of Rights in 1791. The Declaration of Rights of Man, of Citizen, and of the Citizen, adopted in 1789 by France National Assembly, represent one of the basic charters of human liberties, containing the principle that inspired the French Revolution. The basic value introduced by declaration was that all men are born and remain free and equal and are equal in rights, which were specific as the right of liberty, private property, the inviolability of persons, and resistance to oppression. All citizens were equal before the law and were to have the right to participate in legislation directly or indirectly. No one has to be arrested without a judicial order. Freedom of religion, freedom of speech, safeguarding within the boundaries of public order and law, private properties was given the status of an inviolable rights, which could be taken by the state only if an indemnity were given and offices and positions were open to all citizens. So it is in the historical period that the concept, mostly based on political concern of civil and political rights, was defined. These rights, also known as first generation rights, recognize the existence of certain things that the all powerful rulers should not be able to do, and that people should have some influence over the policies affecting them. The two central ideas were those of personal liberty and of protecting the individual against violations by the state. The severe negativity to protect the individual from the excesses of state. So coming to the ancient Persia and how human rights evolved there. The steps forward made since the time of Cyrus were impressive, yet still many of those concepts were, when originally translated into policies, excluded women, people of color, members of certain social, religious, economic, and political groups. Primary example of to overcome the situation are represented by the efforts in the 19th and 20th centuries to prohibit the slave trade and to limit the horrors of war. Significance in the adoption of the first three Geneva Convention and the Hague Convention, expressing the deep concern of public opinion to promote respect of basic level of human dignity of individuals, even in war times, and posing the foundation of modern international humanitarian law. The concerns over the protection of certain minority groups, which were raised by League of Nations at the end of First World War, and the establishment of International Labour Organization to oversee treaties protecting workers with respect to their rights, including their health and safety, manifest the increase of positive attitude towards recognition of importance of human rights
as we know them today. So now we are heading towards the end of the presentation. Uh, we will be covering what is the future of human rights in the end. The future of the human rights stands very grim and gloomy as everywhere human rights are being politicized. Look at the foreign policy which United States of America has, which is predominantly a white supremacist country. If we were to cite the school shooting that happened yesterday and previously in the history of United States of America, then the international politics, especially the issues of national security, forces various governmental agencies to invade the right to privacy of an individual. So again, we have a very grim future of human rights, especially in relation to right to privacy. The problem of white supremacy and dominance of Anglo-Saxon forces UN to be a rubber stamp of the West. This is another major problem, where the whites supremacists subscribing to the Anglo-Saxon Church are forcing UN to be a rubber stamp of the West, which is contemporarily also seen in Ukraine conflict, where Russia has a has Russia doesn't have sufficient backing for its operation in Ukraine, though it's a national security issue or issue of for UN. Thus, human rights are in shambles when it comes to US and its West and the policy of the West in the Middle East. So, in the Middle East, we also see the same thing happening where policies of United States of America, in order to extract oil as a resource over there, is forcing many countries or to acquire dictatorial tendencies, or if not, then we find United States of America, which is a beacon light of liberty, fraternity, and equality, supporting democracy, ending up supporting dictatorship, and monarchies in Gulf countries. So, with this, I come to the end of my presentation, and the floor is now thrown open for criticism, comments, suggestions. Thank you. Just, yeah, it's all. Hello, dear participants. I hope you enjoyed this lectures given by Dr. Khwaja Hameed, who is experts on the historical aspect of international politics, and in keeping mind the gravity of the human rights, he himself come forward and take initiative that there should be a chance, if there is a chance for me to contribute in this value added course. So it would be a better if I could contribute in this value added course by my uh, some sort of knowledge of history, and obviously whether it was the political science, whether it is psychology, economics, or any other discipline of the social science, the historical aspect remain the paramount importance
for understanding the gravity of any discipline. So, as of now, this house is open for question answer session. So, if you have any questions, kindly put them on a comment box so we can read them and forward to our speaker, Dr. Khwaja Danish Hameed sir, so he can answer to those questions. We are waiting for it. I think you enjoyed so much, and therefore you completely understand whatever uh, information provided by Dr. Khwaja Danish Hameed sir. So I must say, I must thanks from our side to our guest speaker, Dr. Khwaja Danish Hameed sir. So let me propose a vote of thanks on behalf of a political science, on behalf of a faculty of the humanities and social science. I, Dr. Mohammed Chavez, propose a vote of thanks to our valued guest speaker of today's lectures, who gave lectures on the institutionalization of the human rights. And Dr. Dr. Hameed mentioned so many important things, and particularly his expertise on history. So he used his expertise in a very fluent manner, in a very extraordinary manner, and he unfolded many those information, many facts which we would have never attained, which we would have never known if Danish Hameed did not attend this lecture, did not take this lecture. So, for example, in the historical context, how he traced this human rights from the Hammurabi, and an older ruler, particularly the king of the Cyprus, and and the and the and the ruler in the Middle East and other continent, particularly the European continent, and how he more emphasized that how what do we really mean by the human rights, and why the human being, the feeling and the realization of the being of human being is important. Because if you are not characterized, if you are not having the feeling of the humanity, same for the other people, you cannot similarize the importance of you as a human and other as a human. So this is very important, and how this institutionalization of human rights could take place in the history from the time of the ruler period, from the time of the kingdom, how, and further in the 19th and 20th century, we experience a massive level of the development in the context of the institutionalization of human rights. And Khwaja Danish Hameed beautifully portrayed all of those essential things in the context of the institutionalization. And now, from the birth of the United Nations itself until the creation of the International Human Rights Council, we have a proper institutionalization of the human rights, by which we can have the yearly report on what on the state regulation over the providing, and the report of human rights in the member state of the United Nations. So very good lectures, very knowledgeable, and that definitely I'm sure that it would definitely enriching, and it would definitely add so much knowledge, so much understanding, very helpful in further interpretation, what is the meaning, what is the essence of the human rights in our life, irrespective of our discipline, whatever discipline we have. So thank you very much. I extend my sincere gratitude to our guest speaker, Dr. Khwaja Hameed sir. Thank you very much, sir, for your beautiful lecture. Thank you very much for your sparing your precious time in this busy schedule, and you came here. We are very indebted for your time and for your valuable lecture. Thank you so much. Thank you, participant, for joining us, and I hope you really enjoyed. And tomorrow we will have
we will have another lecture series. There will be 2 lectures, which will be based on the module 5th, and it will this module 5th lecture will be covered by the Dr. Mohammed Chavez. So ready for the tomorrow's lectures, and then in Saturday we will have a validatory session. So get ready for all the information, for all the collection of information which we have learned from this ongoing value added course. So thank you very much all. Thank you, participant. Thank you, respected teachers. Thank you, our technical staff, for providing your continuous support in order to running this program. Thank you very much. Thank you.